कोई नेता नहीं छुड़ा। बड़े बड़े लोग भाई, कितने पुलिस वाले सस्पेंड हो गए इस चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुंह खोल गए। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और ASI क्या वर्मा उसका विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारी नाम लिया था महीनों लगे। हवाला में जो काम हो रहा है ना, अब देखिए अब इनको पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किए कभी पहले किए। यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं। खरीद सकते क्या? हम लोग चला रहे हैं। ये जो वेड ये सब चीज छोटे वाले लोगों ने पूरा टोटल में मतलब गेम लगता है। आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि Welcome back. You're watching Republic. Time for us to put our focus on what many are saying could be a game changer coming in from the state of Bihar. Not very long ago, Nitish Kumar, remember, had released data for a caste-based survey from the state. Now today what he's done is that he's put out data related to the socio-economic condition of the same castes. Now in this, remember, there are a lot of startling facts when it comes to the state of education, the state of poverty, state of government jobs and everything else in the state. But what Nitish Kumar today has also announced is that he's pitching for a 65% reservation instead of the existing cap of 50. Furthermore, a 10% is going to be dedicated for the EWS, that is the economically weaker section, and 25% for others in the general category. सुनिए, आप एक लास्ट बात सुन लीजिए। इस जाति आधारित गणना में वैसे पंचायतों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां साक्षरता दर, पढ़ाई लिखाई का स्तर राज्य के औसत से कम है। साक्षरता बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग इन पंचायतों में विशेष अभियान चलाएगा। आप जो बोल रहे थे पंचायत का, तब पंचायत का भी करेंगे। अरे सुनो ना बता, तो इसीलिए हम इतना बात आपको बता दिए
माननीय सदा और अब- शांति बनाइए, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। अब इसके बाद आप बैठ जाइए, सुनिए। अब हमारा आप बैठिए, विश्वास है। जगह लीजिए। अब आप जितना स्थान बात ग्रहण हमने आपको कीजिए। बता दिए, तो माननीय हमारा ये मुख्यमंत्री, विश्वास बात को है सुनिए। आप कि जाति गणना के साथ साथ आर्थिक और शैक्षणिक जानकारी के आधार पर खाली जाति गणना नहीं कराए हैं, बल्कि सबकी आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन करवा लिए। इन दोनों के आधार पर इन ऐसी नीतियां बना करके, नीतियां योजनाओं से समाज के गरीब एवं हाशिए पर अवस्थित लोगों का विकास होगा। और न्याय के साथ विकास का हमारा संकल्प है। जिस दिन हम काम संभाले हैं, भूलिए मत। So this is just an exchange that has been reported from the Bihar Assembly a little earlier. Nitish Kumar there talking of the highlights, the opposition there countering a lot of those points. Prakash is also joining us live right now. Prakash, but how will this reportedly be done? You know, there is a cap as far as the Indira Sahni judgment of the Supreme Court is concerned at a 50%. Now beyond that is the EWS quota. Do we have the framework of how Nitish Kumar really plans to achieve a 75% reservation in his state? Well, he will send the proposal to the central government, and thereafter the central government will have to do this, and else then Nitish Kumar will bring out it as one of the legislations and then get it passed in the Vidhan Sabha as a bill if the central government do not do this. First he will put the ball in the central government's court, and thereafter he will take a call. It's all a political decision, and it is all being done to garner votes, and it is all about politics and reservation cap, and that is why the caste survey has been done in Bihar, because in order to counter the Hindutva plank of the BJP, caste is the only narrative that can checkmate, and yes, it has become the talking point in the entire country. And Rahul Gandhi, who did not have an understanding of all this earlier, now we started raising this in the state elections of Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh, and of course primarily in the Hindi heartland. So it will have some resonance in the Hindi heartland for sure, and reservation is such a big issue, even though people who are not going to get any benefits in the near future will be hoping against hope, and that is how the galvanization of the OBCs happen, and as it happened in the case of Mandal Commission in the 90s. But we'll have to wait and watch, because Prime Minister Narendra Modi, who himself belongs to the OBC community, and with a strong personality, with a maximum vote transferring capacity, and one of the most popular leader in the country. So whether or not Nitish Kumar, Lalu Yadav and of course Rahul Gandhi will be able to counter this narrative, so it is going to be very interesting in the run-up to 2024 elections, and we'll have to wait and watch what happens. But meanwhile, the Bihar government led by Nitish Kumar and Lalu Yadav and of course Tejasvi Yadav tabling this proposal in the House after the socio-economic dimension of the caste survey was tabled in the Bihar Vidhan Sabha, proposing that 65% reservation be provided to the OBC and the SC/ST community, and thereafter the 10% reservation for the EWS, which was done by the central government, is already into existence, and 25% seats to be free for the general category, in which everybody can have a stake, including the OBCs and the EBCs as well. So we'll have to wait and watch what unfolds in future. Back to you. Oh yes, and the same survey also tells us that 34% of the Bihar families are those that earn less than 300 rupees per day. So, I mean, that's also something that the ruling government in Bihar must reflect on. Prakash, for the moment, thank you for getting us the latest on that big story. As we head into a quick break right now, but on the other side, we put our focus on the poll-bound state of Telangana that's going to be voting on the 30th. The Prime Minister, as we speak right now, is expected to address this crowd shortly. We are back with that live coverage.
कह रहा हूँ तो पता नहीं रस्सी दूसरे खाने बोल रहा हूँ ना, इस तरह बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ कितने पुलिस वाले सस्पेंड हो गए इस चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुंह खोल गया, पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? होगा कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और हाँ ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारिक नाम लिया था महीनों लगे। हवाला में जो काम हो रहा है, अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इस्तेमाल किए, कभी नहीं पहले किए। यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं, चला रहे हैं। ये जो वेड ये सब चीज छोटे बने वो तो पूरा टोटल में मुझे गेम लगता है। विधायक अभी छठवीं बार पिछले साल 6,700 वोट से जीता था, इस समय उससे ज्यादा वोट से जीतेंगे। आज बार विधायक अभी छठवीं बार पिछले साल 6,700 वोट से जीता था, इस समय उससे ज्यादा वोट से जीतेंगे। कह रहा हूँ तो पता नहीं रस्सी दूसरे खाने बोल रहा हूँ ना, इस तरह बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ कितने पुलिस वाले सस्पेंड हो गए इस चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुंह खोल गया, पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? होगा कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और हाँ ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारिक नाम लिया था महीनों लगे।
प्राइवेट जेट से प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू मैंने कहा था कि एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किए कभी पहले किए। यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं क्या मुझे तो सरकार चला रहे हैं। ये जो वेड ये सभी चीज छोड़े वाले हैं, वो पूरा टोटल में मुझे गेम लगता है। आपको लगता है कि उसको सब Hello and welcome. You're watching the Tuesday edition of This Is Exclusive with me, Shavan Sin. Ladies and gentlemen, it's exactly a month into the Israel-Hamas war. Scores of lives have been lost. Israel says that over 7,000 people have been killed in this war. Gaza, on the other hand, says 10,000 innocent civilians have been killed. Where lies the reality? Whether at all Israel will be able to perhaps see a successful end to this war, or will there be international pressure for bringing in a pause to this war? All this and much more in this edition of This Is Exclusive. But up first, these are the headlines we're tracking for you at this hour. ऐसे आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री को एक दिन भी सीएम की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। आपको मैं गारंटी देता हूं, महादेव सट्टेबाजी घोटाले में भाजपा दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। Prime Minister raises Mahadev scam, says Chief Minister Baghel's house has become a den for gamblers. अयोध्या में राम मंदिर का काम क्या कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस साथी नहीं थी समस्या का समाधान हो। कांग्रेस ने तो कह दिया था कि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और तो राम भक्तों ने कहा कि गुलामी के ढांचे को हटा देंगे, न रहेगा बांस, नहीं बजेगी बांसुरी। Yogi hits out at Congress as Ram Mandir politics rages on, says Congress never wanted Mandir to be built. Aligarh civic body passes resolution unanimously, Aligarh to be known as Harigarh now. As face-off over pollution crisis continues, Supreme Court steps in, says stop the politics and find a solution. Trouble mounts for Elvish Yadav. Noida police serves notice, asks him to appear in the next 48 hours. Israel's relentless fight against terror continues as war against Hamas now completes 1 month.
Starting this edition with some big breaking news now coming in. This massive controversy as Bihar Chief Minister Nitish Kumar makes an obscene, indecent comment, that too inside the State Assembly. In fact, the Bharatiya Janata Party has lashed out at Nitish Kumar, this on a day when the caste census data was tabled on the floor of the assembly in Patna. We'll try and go across to our senior editor Prakash to get us more details about this comment that has been made by the Chief Minister of Bihar, which has certainly been seen as a vulgar statement made by the Chief Minister. In fact, the Bharatiya Janata Party has now lashed out, calling out the Chief Minister, demanding that he apologize for the statement that he has made on the floor of the assembly. Now, in what context did the Chief Minister really make this kind of a statement? We'll try and go across to Prakash for the latest details. Remember, there has already been a fight that is going on between Nitish Kumar and the opposition parties. Let me just quickly go across to my colleague and our senior editor Prakash to just get the latest details. Prakash, in what context did the Chief Minister really make that comment? Bharatiya Janata Party is now dubbing this as completely vulgar and indecent. Well, Nitish Kumar was tabling this whole caste-based survey report in the Bihar Vidhan Sabha, and thereon he was explaining about the whole gambit of caste survey and enhancing the reservations in Bihar from 50 to 65%, and thereafter he was explaining about the sex ratio, and in a way, it as you rightly pointed out, it was an obscene manner in which he tried to explain the whole issue in Bihar Vidhan Sabha, and he later repeated the same in Bihar Vidhan Parishad. Now, the question is, we have been observing Nitish Kumar for quite some time now. He is not known for making such remark, and he's known for his sobriety. But there is something wrong that it seems with the personality of Nitish Kumar of late, whether it is a stress. Politicians suffer through stress for sure, and they tend to lose way. Remember what happened with Atal Bihari Vajpayee, as well as George Fernandez and senior other leaders. And is Nitish headed in that direction? I'm not saying this. That's a case that needs to be examined. But of late, I have been witnessing a change in the behavioral pattern of Nitish Kumar, a politician with all seriousness and sobriety. So were George Fernandez and Atal Bihari Vajpayee. And later in the heydays, all of us have seen what happened to them. Maybe there would be some medical issues. So it's a matter of great concern. For sure, and that needs to be analyzed by the party men. I'm sure the ruling party members would be looking at this, and yes, the BJP has lashed out at Bihar Chief Minister Nitish Kumar. Of course, they are in the opposition. They have all the right and reasons to lash out and comment on Nitish Kumar, because in politics there are no friends and there are no mercy as well. So without explaining the whole situation, Shavan, because we are no one, we are not medical practitioners, and we are not experts on medical sciences. We cannot elaborate and explain, but just giving it a hint, because based on my experience, what I've covered politics in Bihar, I can see that there is a certain change in the behavioral pattern of Nitish Kumar, and that needs to be examined. Back to you. Well, let me also bring in our political editor, Aishwarya Kapoor, who is also joining us on this broadcast. In fact, Prakash, I'll just request you to stay on with us. The BJP, on the other hand, Aishwarya, has lashed out at the Chief Minister, saying that this is a speech that he has once again repeated. So there is absolutely no remorse from coming in from the Chief Minister at this point in time. Why don't you help us understand what is it that the BJP is essentially demanding at this stage? No, Shavan, this is deliberate. Nitish Kumar has made the same speech for the second time. This is vulgar. There is no other word. Prakash was talking about the medical history of Nitish Kumar, what is wrong. But Prakash, you've been covering Nitish Kumar for the longest period of time. Yes, he was not known. But here is a man who still dons a wish to be the Prime Minister of this country, and this is the statement he's making. And he's making not once but twice. So it's a deliberate statement being made by a man, by a leader, a senior leader, yes,
but who wants to be the Prime Minister of this country. And then the India alliance is quiet. Sonia Gandhi is quiet. Priyanka Gandhi is quiet. Prakash, what is happening? How is he handling the state of Bihar like this? And while these statements were being made, there were women MLAs present in both the assemblies. And while we are speaking, Prakash and Chavan, we are joined in by former Deputy Chief Minister of Bihar, Tarkeshwar ji. ये किस तरह की टिप्पणी है नीतीश कुमार की? किस तरह की टिप्पणी है तारकेश्वर जी? अभद्र टिप्पणी, बेहुदा टिप्पणी। इस प्रकार से बयान दे रहे थे और जिन शब्दों का प्रयोग किया यह कतई बड़ी सभा में यह उचित नहीं था। उन्हें अच्छे शब्दों का प्रयोग करके किसी भी विषय को बेहतर ढंग से बताना चाहिए था। ये लग रहा है कहीं न कहीं उन्होंने चूक की है। हम सबों को भी अच्छा नहीं लगा। तारकेश्वर जी, चूक एक बार होती है। तारकेश्वर जी, चूक एक बार होती है। नहीं तारकेश्वर जी, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, चूक एक बार होती है, चूक दो बार नहीं होती। नीतीश कुमार ने रिपीट की है स्पीच और सेम स्पीच विधान परिषद में भी जाके बोले। ये चूक नहीं, ये डेलिबरेट है। नहीं, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं, इनको नहीं करना चाहिए था जी। सभी हमारी माननीय महिला विधायक थी, सभी लोग थे, पर आप स्वयं भी हम सबको अच्छा नहीं लगा। यह उनकी चूक थी, ये बचना चाहिए था। इस तरह का बयान उन्हें बंद करना पड़ेगा। अच्छा नहीं लगता है कि इसमें पुराने हमारे बिहार के कई बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इन चीजों से उन्हें बचना चाहिए। जी, so that was Tarkeshwar, Shavan and Prakash, but vulgar, shameful, but here is a man who still dawns a dream of being the Prime Minister of this country, and then the India alliance is quiet, Sonia Gandhi is quiet, Priyanka Gandhi is quiet. It is unacceptable. Shavan, we are joined in by our editor-in-chief, Arnab Goswami. Minister of Bihar, which the Bharatiya Janata Party is Shavan, we are joined in by our editor-in-chief, Arnab Goswami. Arnab, over to you. Shavan, I just wanted to say this. I wanted to say this, Aishwarya, that I happened to see the tape of what Nitish Kumar has said, and I think it is disgraceful. I think Nitish Kumar has disgraced the position of Chief Minister. He should quit. I think that what he is basically and essentially saying is this, and I will put it as simply as one can. He has said that according to him, the purpose of a woman getting educated is for her to have sex without getting pregnant. In his views, according to the great Nitish Kumar, an educated woman at the moment of sexual intercourse knows how to not get pregnant. He has further said, in a way that he's treated women as sexual objects, he has said, jab log karte hain, which means he says when men do it to women, which is a terrible way of speaking. When men do it, educated women know how to not get pregnant. So he's brought down the purpose of educating women down to sexual intercourse and to the fact that an educated woman can devise a way to not get pregnant. He has further said that when men want to do it in winter, so look at the kind of referencing that he is doing, almost treating women like animals. Nitish Kumar should be ashamed of himself. Almost treating women as animals, objects of pure sexual release. If I were to say that, a woman is an object of sexual release, according to Nitish Kumar, she should reconcile herself to being an object of sexual release, and it is for her to use her education to avoid getting pregnant while accepting the fact that because she's a woman, when a man wants to quote unquote do it in winter, she should allow him to do it, but it is upon her to teach him how to not make her pregnant. The entire purpose, therefore, of contraception or safe sex is upon the woman. The man is treated as a person who can treat a woman as a sexual object. I, in my entire career, have never seen such a disgraceful
objectification of women as Nitish Kumar has done. I call upon these India Alliance leaders to learn to speak up. Sonia Gandhi and Mamata Banerjee should lead the charge. Nitish Kumar should quit as the Chief Minister of Bihar, and across the entire country there should be a movement against the comments of Nitish Kumar, which I cannot believe that a person who's being propped up as a potential Prime Minister, he should quit public life. He should no longer be in public life. And the terrible thing I have heard, I'm told Tejaswi is smiling and laughing. I want to ask Tejaswi to go to the women in his household and ask them what they think of what Nitish Kumar has said and the fact that he was laughing when he said it. I'm sorry I had to come out and say this. Nitish Kumar should quit. I think Nitish Kumar, you have no right to be in public life. I think this is the lowest of the low. You should just get out of the position that you are sitting in. Yeah, this is because shows his dirty. It shows the dirty mindset of the Bihar Chief Minister. Please. So that was Arnab Goswami making it very clear that it's time for Nitish Kumar to resign. He has no place, Shravan and Prakash. He has no place in public life. And as Arnab was just saying, here is a man whom India Alliance is still trying to project as a possible Prime Ministerial candidate. Not acceptable at all. Shameful. Back to you. Let's also quickly go back to Prakash, our senior editor, joining us from Patna, where I'm told that he's joined by a guest. Over to you, Prakash. Well, Sawan, I'm joined by Devesh Kumar. He's a BJP MLC, and he was present there in the house when Nitish Kumar made some obscene remarks about explaining the whole situation. Did you feel the same, Devesh ji? I actually was quite disgusted. And I was trying to watch the facial reaction of JDU members, and I could sense that many of them, they were equally ashamed. They couldn't express themselves vocally, but I could sense that they were also very uncomfortable. It's very deplorable and it's highly condemnable because he made similar remarks. I am told that Vidhan Sabha. I was present there in the Vidhan Sabha. I would have hoped that some members would have injected some sense into him, not to repeat the same mistake in the Vidhan Parishad. But he did, and which is absolutely deplorable. It only means there's no democracy within JDU. There is no one who is going to bell the cat. That's the question. No member thought it fit to point out that he shouldn't have repeated those remarks in the council. He shouldn't have made those remarks in the assembly first, and shouldn't have repeated it in What is wrong with Nitish Kumar? What do you feel? What is wrong with Nitish Kumar? Because Samrat Chaudhary, off and on, your state president, he says that he's a memory loss chief minister. Right. Because we've been seeing that Nitish Kumar of late has a tendency to lose control over his mind and body. Mind you, this is not the first time he has made anti-women remarks. He had made similar remarks, I remember, a few months ago when he talked about similar things among the animals. So I think he's lost it completely. He should very gracefully step down from his post and hand over the mantle to someone else. His anti-women, his gender biases are now coming out into the open. How will the BJP take it forward? Because still 4 months left for the House proceedings to end. See, his lapses, they are becoming quite frequent, and our president has been harping on this. And it is the memory loss. Yeah, and it is for the people to judge. Elections are round the corner, Lok Sabha elections and then the assembly elections. I'm sure people would exercise they would express their feelings through these elections. It's a medical case? I think age is showing on his behavior. Do you observe this in the House? I'm telling you, I have been a part of the. I can tell you, I have been speaking to JDU members, and quite a few. They would not speak it openly, but they were also equally disgusted. Thank you, Devesh ji. Today you have Devesh Kumar, senior BJP legislator, and he's a former journalist as well. He's saying that it's disgusting, and Nitish Kumar should immediately resign.
Guru Prakash Paswan ji, Nitish Kumar has made an obscene remark against women in the house. In fact, in both the houses, Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. How do you take this statement? I was speaking to Devesh Kumar, your legislator in the Bihar Legislative Council. He was disgusted. How does the BJP react to it? This is an insult to more than 6 crore women of Bihar. Bihar is a land of Sita. माँ जानकी की भूमि बिहार में जानकी की बच्चियों के साथ इस प्रकार का अन्याय और साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। Well, in fact, you have Nitish Kumar making that vulgar statement, and now you have Tejasvi once again trying to defend this. Let me once again go back to our senior editor Prakash, who's there on the ground getting us the latest details. Prakash, you've heard what Tejasvi had to say. Not a single word suggesting that they have any remorse of the kind of statement that they've made, and the objectivity. महिलाएं हैं वो सारी शर्मसार हुई है। अभी तक हम लोगों ने विधानसभा में सुना था, लेकिन आज जब ये विधान परिषद में एक बार फिर उस बात को हिम्मत जुटा कर कहने की हिम्मत किए हैं, तो ये बहुत ही बुरी बात है। और आधी आबादी इनके बातों को कहीं से भी इग्नोर नहीं करेगी, और आने वाला समय इनको बिहार की जनता जवाब देने का काम करेगी। क्योंकि कोई भी काम अगर पर्दे के पीछे होता है तो पर्दे के पीछे रहता है, पर्दे के सामने लाने का हर विषय हर समय हर जगह स्थान तय होता है। ये सारे लोग जानते हैं, जो भी महिला है या पुरुष है। और आज मुख्यमंत्री जी भी किसी माँ के गर्भ से पैदा लिए थे, और उस माँ से जाकर पूछे कि वो माँ कैसे उनको पैदा की थी, तब मैं जानूंगी मुख्यमंत्री ये नहीं है। तो सेक्स एजुकेशन की बात है, तो सेक्स विद्यालय क्यों नहीं खुलवा दे रहे हैं विधानसभा विधान परिषद में? डिफेंड किया, ये कोई विषय है कि आप सेक्स विद्यालय चढ़ाएंगे हाउस में? ये गिने चुने माननीय लोग आते हैं जो आपके सरकार को बनाते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और आप इस तरह के आपत्तिजनक बयान देंगे आप सड़कों पे? जो सारा देश और सारा मीडिया आपको सुन रहा है, आप जातीय जनगणना पे आप बोल रहे हैं, हम लोग समर्थन करते हैं उसका, कि हमने भी आपके साथ बैठकर जातीय जनगणना का सपोर्ट किया था। उसके लिए सभी लोग बैठकर मुख्यमंत्री की बातों को सुन रहे थे, और उसमें आप एक दो शब्द को विषय को लाने का काम करते हैं। ये कहीं से उचित है क्या? मुझे वो शब्द सुनने का कहीं से कोई इच्छा नहीं थी। मैं सदन से बाहर चली आई, मैं चाहती तो वहां मुख्यमंत्री को जवाब देकर आती, लेकिन मेरे नेता वहां बैठे हुए थे। मुझे ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि मैं जवाब दूं। जवाब देने के लिए हम लोग के लिए पार्टी का फोरम है, हमारे अध्यक्ष हैं, सभी बोलेंगे। और जो आज मुख्यमंत्री जी ने किया है, पूरी बिहार की महिला शर्मसार है, और मैं इसका बहुत ही कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ। एक माननीय सदस्य होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, एक महिला पत्नी होने के नाते क्या आपके आंखों में आंसू क्यों हैं? आपके आंखों में आंसू हैं क्योंकि जो विषय है, देखिए, जल्दी भावुक मैं नहीं होती हूँ, लेकिन आज जो शब्द उन्होंने दोहराया हाउस में, पहले विधानसभा में, फिर विधान परिषद में, तो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग यहाँ भी करेंगे। हम लोगों ने सुना, हम लोगों तो आप तो अच्छा बर्ताव कर रहे थे लोगों से, क्या हो गया है? ये राजद के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ आप जाने के बाद आपकी स्थिति गड़बड़ा गई है। दोनों सदन में जिस तरह उन्होंने कहा, हमारी जो बहनें माननीय सदस्य हैं वो तो शर्मसार हो गई। लोकतंत्र में इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सेक्स एजुकेशन था, ये सेक्स एजुकेशन था। देखिए, हम लोगों के किताब में भी इतना साफ साफ बातें नहीं बताई जाती है। अब उप मुख्यमंत्री जी को यदि इतना अच्छा लग रहा है तो अपना टीचर बना ले। कर आग्रह किया कि आप क्या बोल रहे हैं,
लोकतंत्र में जहां यहाँ बहनें बैठी हो और जिस तरह का हम लोग तो बार बार कह रहे थे कि आप गार्जियन हैं, इस तरह का बयान मत दें, लेकिन नीतीश कुमार जी को क्या हो गया है पता नहीं चल पा रहा। आपको क्या लगता है उनको क्या हो गया? आप अक्सर बोलते हैं मेमोरी लॉस चीफ मिनिस्टर। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब तक हमारे साथ थे तो तब तक तो ठीक ही लग रहे थे। ये पता नहीं राजद वाले लोगों ने क्या कर दिया है नीतीश बाबू के साथ। क्या कर दिया है? अब तो ये तो जांच का विषय है ना। ने कहा कि सेक्स एजुकेशन की बातें समझाने की कोशिश कर रहे थे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो इतना तो साफ साफ किताब में भी लिखा नहीं जाता है, और यदि डिप्टी सीएम साहब को अच्छा लगा है तो अपना टीचर नियुक्त कर ले। So there you have Samrat Chaudhary, the state president of the BJP, again lashing out at Bihar Chief Minister Nitish Kumar outside the Bihar Legislative Council. He was. आप भी थे वहाँ पे सदन में, आपने एक बार बीच में रोका भी। नहीं, मैंने हाथ जोड़कर आग्रह किया कि नीतीश बाबू इन सब बातों से बचिए, लेकिन नीतीश कुमार जी मानने के लिए तैयार नहीं थे। जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने किया महिला बहनों के साथ, बिहार की 6.5 करोड़ महिला बहनें शर्मसार हो गई। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार के साथ क्या हो रहा है? ये नीतीश जी अब बीमार हैं, पूरी तरह बीमार हैं, और कोई ना कोई गलत दवाई देने का काम ये लोग कर रहे हैं। कौन दे रहा है गलत दवाई? ये राजद और कांग्रेस के लोग ही देंगे दवाई दिया जा रहा है, और जो उनके साथ रहते हैं वही लोग करेंगे। क्या मेंटल स्ट्रेस में है वो सम्राट जी? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए शर्मसार। इस्तीफे की भी मांग हो रही है, अब आपके पार्टी के लोग मांग कर रहे हैं कि एकदम करना ही चाहिए। बिहार की 6.5 करोड़ महिला बहनों के लिए जो अब शब्द का प्रयोग नीतीश कुमार जी ने किया है, उनको तो 1 घंटा भी मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। There we have Samrat Chaudhary, the state president of the BJP. We are joined by Sakti Singh Yadav, the RJD spokesperson, in fact the chief spokesperson. Sakti Yadav जी, जिस तरीके का बयान नीतीश कुमार जी ने आज दिया दोनों सदनों में, बीजेपी के लोग, कभी सम्राट चौधरी से बात कर रहा था मैं, तो वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए इस तरह की अमर्यादित भाषा के लिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही, एक बात तो स्पष्ट तौर पे है कि जो चीजें गवई अंदाज में लोग कहते हैं, तो उसका उन्होंने एक तरह से उसी अंदाज का सहारा लिया। अमूमन इन शब्दों का सहारा लेने में कई लोग नहीं भी सहारा ले सकते हैं, कुछ लोग लेते भी नहीं हैं, लेकिन वो जनसंख्या के नियंत्रण के सवाल पर जिन शब्दों का प्रयोग किया, हो सकता है कई लोगों को लगा होगा, लेकिन बाबत भी एक गवाही रूप में इस तरह शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, और हमें नहीं लगता है कि इसको ज्यादा तूल देने की कोई आवश्यकता है। बीजेपी शक्ति जी ये भी बोल रही है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे, उसको आपत्ति ये इस बात पर है कि ये किस तरह की सेक्स एजुकेशन है जो खुलेआम आप दोनों सदनों में दे रहे हैं, विधानसभा और विधान परिषद दोनों में। देखिए, एक्चुअली अवेयर तो सब लोग होते ही हैं, और जिस तरह से शैक्षणिक वातावरण समाज में और देश में बढ़ रहा है, युवा और युवतियां, लड़के और लड़कियां, सब लोग इन बातों से बहुत ही सजगता के साथ इन चीजों को समझते भी हैं। और मैं समझता हूं कि जागरूकता के लिए अगर कोई शब्द कहने में थोड़ी कठोर लगे, थोड़ा तकलीफदायक लगे, लेकिन बावत भी उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया है नियंत्रण को लेकर करके, इसलिए उसको अलग अंदाज में कहीं देखा नहीं जाना चाहिए। एक तरह से जागरूक करने की कभी कभी कठोर शब्द का इस्तेमाल कर देना पड़ता है, लेकिन उन्होंने किया, बावत भी उन्होंने किया, इसलिए मेरा मत साफ है कि इसको अन्यथा या कुछ शब्दों का रूप में नहीं देखी जानी चाहिए। ये बात तो सबको ही जानते हैं, हर व्यक्ति इस बात से अवगत है जो बातों को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा, लेकिन जो मान ली कि जागरूकता तो होनी ही चाहिए, लोगों में जागृति होती है तो लेकिन बहुत सारी
शक्ति जी बहुत सारी बातों से बहुत लोग अवगत रहते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें जो है पर्दे के पीछे रखी जाती है, क्लोज डोर में रखी जाती है। ये सब बातें कहने की नहीं होती है, उसका तरीका होता है। बहरहाल बीजेपी के लोग जो है मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रकाश जी, लेट मी कंप्लीट। एक्चुअली इस्तीफे का सवाल नहीं है। लड़कों में लड़कियों में अंतर है, खास करके जागरूकता को लेकर के। लड़कियों को बताने के लिए माँ भी हैं, उनकी बहनें भी हैं, चाची भी हैं, दादी भी हैं, भौजाई भी हैं। लड़का जागरूक कम होता है, इस परिप्रेक्ष्य में यह बात सबको कबूल करनी चाहिए। अगर मान लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको प्रस्तुत किया है, तो हमें नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई इस्तीफे की बात कह दे, ये हमें समझ से परे लगता है। अब लड़की पटाओ कह देने की बात पर कोई जब नहीं हो सकता है, ये बात कही जा सकती है। अब लड़की पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को बेटी पटाओ तक की कह दी देश के प्रधानमंत्री जी ने। अब उन शब्दों पर हम जाना नहीं चाहते। अगर जागरूकता करने की दिशा में जनसंख्या नियंत्रण हो रहा है, जो हमारा प्रजनन दर है, उन सबको अगर देखेंगे तो एक बार लगेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाववश जिन बातों को प्रस्तुत किया है, उसको अजर दृष्टिकोण से नहीं देखी जानी चाहिए। Thank you, Shakti Yadav ji. Now there is a big controversy that has erupted in Bihar after Nitish Kumar's obscene remark in both the houses of the Bihar Vidhan Sabha as well as the Bihar Vidhan Parishad. BJP demanding Chief Minister's resignation for obscene remark against the women in Bihar. We'll now sip into a short break. For news, keep watching Republic TV. Right, Prakash getting us top updates, senior editor. Very big statement being made and the BJP slamming Nitish over the vulgar comment. We're getting many reactions coming in right now after this comment has come in, which is extremely vulgar, extremely sexist. Let's go ahead what BJP's Shehzad Poonawala had to say. The language used by Mr. Nitish Kumar ji inside the assembly is most vulgar, indecent, misogynistic, and it symbolizes a mindset which is anti-woman. On the one hand, the Prime Minister has passed Nari Shakti Vandan Adhiniyam. We bow down to Matru Shakti. We have celebrated Navratra. We celebrate woman power. But on the other hand, this is the kind of language the Chief Minister of Bihar is speaking, and this is an alliance which says ladki hu, lad sakti hu. They say that they are for women's rights. No wonder Rajasthan has become #1 in rapes. No wonder women are not safe in Bihar. No wonder it is a jungle raj. No wonder people like Shanti Dhariwal, who say Mardon ka Pradesh, get a ticket in Congress party from such an alliance. No wonder that this kind of statement evokes no reaction from Mamata Banerjee, from Priyanka Vadra, Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, Arvind Kejriwal. Do they condone such statements or do they condemn it? This is the mindset of the Chief Minister of Bihar. Imagine what will be the plight of the women of Bihar if such a kind of language is spoken inside the assembly. This is the most misogynistic, sexist, patriarchal and extremely anti-woman statement made by him. And therefore, today the women of Bihar are rejecting this kind of jungle Raj government. And viewers, not just that, what's most shocking is what Nitish's deputy said. Tejasvi Kumar has come out to defend the very sexist remark, and he has also come out with a very misogynistic defense. Listen in. कि पहला दिन बोलिए 10-11 का जो रिपोर्ट आया या 20 का जो रिपोर्ट आया, एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। So
So viewers, what we see right now is a very obnoxious, sexist, vulgar comment which has come in from Nitish Kumar. A big controversy has erupted as the Bihar CM Nitish Kumar has made an obscene, indecent comment in the state assembly, and the BJP has lashed out at Nitish for the obscene comment that he has made. And what was most shocking as well, you just heard a short while back, is what Nitish's deputy had to say. He has defended Nitish Kumar's comments. Let's go to Prakash, our senior editor, who's joining us. Prakash, this is not the first time that we have seen such a sexist comment coming in. Earlier, Prakash, this year itself, Nitish Kumar said, when women will get educated, only then will the population come under control. We men do not think so much about family planning. This comment had come in earlier this year, but nothing has changed. Another vulgar comment coming in from Nitish Kumar. Prakash. Yes, this is quite an obscene comment. I am joined by निवेदिता जी. निवेदिता जी, जब आप सदन में मौजूद थी वहाँ पे जब ये भाषण हो रहा था नीतीश कुमार से. निवेदिता जी is an MLC from the BJP. She was present there in the house. निवेदिता जी, आप सदन में मौजूद थी. आप क्या हतप्रभ हो गई? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के साथ कुछ हेल्थ इश्यूज है? देखिए, सदन में आज हम लोग बैठे थे और जो जातीय गणना और आर्थिक गणना का रिपोर्ट पेश किया गया और उस पर वाद विवाद चल रहा था. सभी लोग, हमारी पार्टी भी उसका समर्थन कर रही है और हमारे सहयोग से उस समय हम सरकार में थे, तभी इस विषय का निर्णय लिया गया था. और निर्णय के बाद आज रिपोर्ट जारी की गई है. तो रिपोर्ट जारी की गई, इस पर चर्चाएं हो रही थी. सभी लोग बड़े अच्छे माहौल में, सभी कोई अपना वाद विवाद कर रहा था. बट सदन शुरू होने के पहले हम लोग को चर्चा मिली थी, खबर मिली थी कि इस तरह के वक्तव्य उन्होंने विधानसभा में दिया है. तो हम लोग बहुत उस समय इस विषय पर चिंतित थे कि आखिर इस विषय पर क्या करना है. बट वी कांट एक्सपेक्ट दैट कि इन अपर हाउस आल्सो सीएम हैज टेल दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट. बहुत ही शर्मनाक और शर्मसार कर देने वाला माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान, जो बिहार की आधी आबादी को उन्होंने आज अपमानित किया है. जो पर्दे के पीछे जो लज्जा, जो महिलाओं की सर पे आंचल और पल्लू, जो सारी विषय जो होती हैं, उसको आप सरेआम आज बाजार में एक तरह से खोल कर रख दिया. क्या आप साबित करना चाहे, क्या आप बताना चाह रहे थे? उसमें कौन पिता नहीं था, कौन माता नहीं थी, कौन नाना नहीं था, कौन पुत्र वधुआ का व्यक्ति नहीं था? किसको आप इस बात को बता रहे थे? ये है निवेदिता जी, बीजेपी और जेडीयू काफी दिनों तक साथ रही है. नीतीश कुमार एक गंभीर नेता के रूप में गिने जाते थे, तो क्या आपको लगता है कि उनके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज है? देखिए, कुछ दिनों से जो एक होता है बेमेल गठबंधन, जब तक हम साथ थे तो इंजीनियर नीतीश कुमार कहलाए जाते थे और विकास पुरुष के रूप में जाने जाते थे. लेकिन आज वो जो हैं, कहावत है संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात. तो जब नन मैट्रिक का इंटर पास व्यक्ति के साथ रहेंगे तो दिमाग भी आदमी का उसी तरह से काम करने लगता है. तो अभी वो हर बात तेजस्वी इससे पूछ के करते हैं. तो इनका जो जितना साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट था, इनका जो इंटेलिजेंस था, वो सब फेल हो गया है. अब सिर्फ यही है, इनका याददाश्त भी कम काम कर रहा है, बोलते हैं भूल जाते हैं. अभी कुछ और भी प्रकरण है जो आज उन्होंने किया. क्या स्ट्रेस में है वो? काफी स्ट्रेस में है. उनको लग रहा है कि अब मेरी कुर्सी अब ये नहीं रही, क्योंकि उन्होंने स्वयं घोषित कर दिया कि आने वाला मुख्यमंत्री फलाने जी होंगे. तो मुख्यमंत्री यही सोचे कि इस कुर्सी को नहीं मिला, उधर राष्ट्रीय संयोजक INDIA के बने नहीं, तो आखिर हम करेंगे. तो नीतीश कुमार बहुत जल्दी बेरोजगार होने वाले हैं. स्ट्रेस में, बिल्कुल स्ट्रेस में. आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं अक्सर मेमोरी लॉस सीएम, तो उसका तात्पर्य क्या है मेमोरी लॉस सीएम? मेमोरी लॉस ये कि अभी आप आपसे बात कर रहे हैं मीडिया से कुछ और, आधे घंटे बाद बगल में जाके कुछ और बयान देते हैं. तो उसको क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री, हम लोग भी क्लास में पढ़ते हैं, हम लोग भी आज जो उम्र हम लोग की हो गई राजनीति करते हुए 23 वर्ष बीत गए. आज माननीय अगर प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि आज इस विषय को नहीं बोलना, तो हम लोग भी सुनते हैं कि नहीं बोलना है. क्या आपको लगता है, मैं आखिरी सवाल लूंगा, आपको क्या लगता है, आप भी राजनीति में बहुत दिन से हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनका दिमाग और बॉडी का संतुलन खो चुका है? दिमाग तो उनका काम करना ही बंद कर दिया है. हमें तो यही लगता है वो मदद पे चल रहे हैं, और मदद कब तक चलेगी वो बैसाखी, ये अब बिहार की जनता. आपको लगता है कि जेडीयू को कॉल लेना चाहिए, महागठबंधन को? यहाँ देखिए,
ये तो विषय मुख्यमंत्री के दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि इस टाइप का जो बाप रे वो लैंग्वेज उनका दिमाग में घूम रहा है। दो चार आप लोग क्या शॉक्ड हैं? बिल्कुल इस तरह का बयान आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था? इस तरह का बयान हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे। अभी इनके मुंह से निवेदिता जी, आपसे हम 7 बजे फिर बात करना चाहेंगे। आपके आवास पर हम आपसे संपर्क साधेंगे। 7 बजे रिपब्लिक टीवी पे आप रहेंगी। तो देयर वी हैव निवेदिता सिंह, MLC of Bihar Vidhan Parishad from the BJP, criticizing the atrocious remark made by the Bihar Chief Minister Nitish Kumar, and we'll try and get in a word from Mangal Pandey. Mangal Pandey, former president of the BJP. Ek second, Mangal ji. So we'll try and get in a word from Mangal Pandey. He's the former president of the BJP, very senior leader, and everybody is in a state of shock after Nitish Kumar's statement as to what has happened to Nitish Kumar. Samrat Chaudhary has been saying that he's become a memory loss CM. Are there any health issues with In the India Today Best Universities 2023 survey, released recently, India's #1 ranked universities in various streams are JNU Delhi, Amity University, AIMS Delhi, IIT Delhi, and National Law School Bengaluru. पता नहीं रस्सी दूसरे खाने बोल रहा हूँ ना, इतना बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा है। बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ कितने पुलिस वाले सस्पेंड हो गए इस चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुंह हो गया। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और ASI क्या वर्मा से विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारिक नाम दिया था, नहीं हो रहे हैं। हवाला में जो काम हो रहा है ना, अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इस्तेमाल किए कभी पहले किए। यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है।
अरे पत्ते क्या हम लोग चला रहे हैं। ये जो रेड ये सब चीज छोटे हो रहे हैं, वो पूरा टोटल में मुझे जुर्म लगता है। आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब को काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, हमेशा डिबेट हाउस में आते थे, तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। Viewers, a very big controversy has erupted. According to Nitish Kumar, the purpose of educating women is to have sex without getting pregnant. According to Nitish Kumar, women are nothing but mere objects of sexual release. Listen in to this extremely sexist and outrageous remark. और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। Viewers, much more coming up on the other side. Massive controversy as Bihar CM Nitish Kumar makes an obscene, indecent comment in the State Assembly. BJP has lashed out at Nitish Kumar. Stay tuned. पता नहीं रस्सी दूसरे खा रहे हो रहा हूँ ना, इतना बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा। बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ पुलिस वाले सस्पेंड हो गए इस चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुंह खोल रहे हैं। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारिक नाम लिया था, नहीं हो रहे हैं। हवाला में जो काम हो रहा है ना, अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इस्तेमाल किए, कभी पहले किए। यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है।
सरकार खरीद सकते हैं। खरीद सकते क्या हम लोग? सरकार चला रही है। ये जो वेड ये सभी चीज छोड़े वाले लोगों को पूरा टोटल में मुझे गेम लगता है। आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, हमेशा जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। यहाँ पे तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जोरदार धमाका व गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। हम यहाँ पर रिपोर्ट करने पहुंचे तो और अचानक जोरदार अलर्ट जारी किया गया और उसके बाद Welcome back. You're watching Republic TV, and what we are seeing right now is a big controversy over Nitish Kumar's comment, which was very, very vulgar. And not just that, Nitish's deputy Tejasvi Yad Kumar has now come out to defend the utterly sexist remark. Listen in to this misogynistic defense. भाजपा की महिला विधायकों ने ये कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने सदन में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो अमर्यादित हैं। नहीं, देखिए एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। Viewers, much more coming up on the other side. Massive anger erupts over Nitish's vulgar and sexist comment in the State Assembly. In the India Today Best Universities 2023 survey, released recently, India's #1 ranked universities in various streams are JNU Delhi, Amity University, AIMS Delhi, IIT Delhi, and National Law School, Bengaluru. पतंग रस्सी दूसरे खाने बोल रहा हूँ ना, इस तरह बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ खिदमत पुलिस वाले सस्पेंड हो गए चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुंह खोल रहे हैं। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारिक नाम लिया था महीनों लगे। हवाला में जो काम हो रहा है, अब देखिए अब इनको पैसा कैसे आएगा, प्राइवेट जज कर
प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किए कभी नहीं पहले किए। यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं क्या हम लोग चला रहे हैं। ये जो वेड ये Viewers, we are live and breaking and we're getting the top updates, and there's a huge anger, a big controversy has erupted over Nitish Kumar's remarks, sexist and vulgar remarks. The BJP has launched a scathing attack on Nitish Kumar, and the BJP is saying that no wonder that Jungle Raj is back under the Nitish government. Listen in. The language used by Mr. Nitish Kumar ji inside the assembly is most vulgar, indecent, misogynistic, and it symbolizes a mindset which is anti-woman. On the one hand, the Prime Minister has passed Nari Shakti Vandan Adhiniyam. We bow down to Matru Shakti. We have celebrated Navratra. We celebrate woman power. But on the other hand, this is the kind of language the Chief Minister of Bihar is speaking. And this is an alliance which says, Ladki hu, lad sakti hu. They say that they are for women's rights. No wonder Rajasthan has become #1 in rapes. No wonder women are not safe in Bihar. No wonder it is a jungle raj. No wonder people like Shanti Dhariwal who say Mardo. Viewers, much more coming up on the other side. Massive anger over Nitish's remark in the state assembly. The BJP also heading out. Stay tuned. कह रहा हूँ पतंगे रस्सी दूसरे खाते बोल रहा हूँ ना, इस तरह बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा। बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ कितने पुलिस वाले सस्पेंड हो गए इस चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुंह खोल गए। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और हाँ ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारिक नाम लिया था महीनों लगे। हवाला में जो काम हो रहा है, अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किए कभी नहीं पहले किए। यहाँ की सरकार ने,
यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। ये पूरी बर्बाद कर सकते हैं। सकते क्या हम लोग चला रहे हैं। ये जो वेड ये सब चीज छोटे वाले ये लोगों ने पूरा टोटल में मुझे गेम लगता है। आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, हमेशा जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। A very good evening. You're watching Republic and I'm Deepthi Sachdeva. Ladies and gentlemen, during the course of coverage, during the course of our reportage, a lot of times you will hear a lot of netas making a lot of loose comments. And every time a neta makes a loose comment, we begin to think what this neta would really be thinking when he makes a comment like that and how low can netas really go. But then, a comment like that being made from someone who aspires to be the Prime Minister of the country, who is called Sushasan Babu, Nitish Kumar. I'm not sure whether you've heard this comment that he made in the Bihar Assembly a little earlier or not, but in case you haven't, you must hear him very, very carefully. That's a remark that I don't think anyone is able to forget or forgive Nitish Kumar for. Will Nitish Kumar apologize? Or as always, netas will say, this is a comment that has been misconstrued by the media. Here on this edition of the news, we deep dive into that big subject. We'll also get reactions from a lot of other political parties, and you, the viewer, as always, can also write to us on republicworld.com. Let's quickly get kick-started with the headlines. First up. Nitish loses the plot, makes the most misogynist, obscene and a vulgar comment in the Bihar Assembly and then repeats that again in the council. Deputy Tejasvi is backing Nitish Kumar. He defends his comments by calling this, quote-unquote, sex education. The BJP lashing out at the Nitish Kumar comment, demanding his resignation now. Nitish Kumar earlier tables the caste census report in the Bihar Assembly. He is pitching for a 75% reservation. Prime Minister raises a Mahadev scam. He says the Chief Minister Baghel's house has become a den for gamblers.
Israel's relentless fight against terror continues as the war against Hamas now completes a month. Five terror attacks in 4 days in Pakistan, terror haven Pakistan witnessing all-out chaos. So you can call this obscene, you can call this indecent, you can call this anything that you like. But this is a comment that you cannot forget easily. In fact, the first time that I saw this comment on the social media, I thought perhaps this is just an edited comment. I could not believe the fact that this is Nitish Kumar, someone who is known to be an astute politician, who aspires to be the next Prime Minister of the country, actually did say something like this. And not once, but twice. Because he says this for the first time in the State Assembly, then he repeats this in the Legislative Council. Now, I clearly would not want to tell you right away what Nitish Kumar has said, because you must hear it from Nitish Kumar himself. But I'll just give you a broader sense of what he said and why that comment today has angered and perhaps, made all of us feel so ashamed. If these are netas that we call Sushasan Babu just like that. Now, according to Nitish Kumar, the purpose of educating women is to have sex without getting pregnant. You heard that absolutely right. Nitish Kumar is talking about all this and much more in the Assembly, in the Legislative Council. According to him, women are nothing but mere objects of sexual release. And I'm still being kind when I say those words, but it's important for you, like I said, to listen in to what exactly we've heard from the Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar. और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। So that is what Nitish Kumar has said. That entire reaction is a little longer, but what you've heard is just about 40 seconds. And in just these 40 seconds, Nitish Kumar gives you the biggest reason why he perhaps cannot continue as the Chief Minister of Bihar. This is what the BJP also says. So here is where people wanted to know how would his deputy, Tejasvi Yadav, would want to respond to what he has said. Now, if you look very closely at this particular frame on your screens, on the bottom left is where you will see in the full frame Tejasvi sitting right next to Nitish Kumar while he is making this comment. Now, if Nitish Kumar was saying something that he did not realize the import of, did Tejasvi Yadav stop him? The answer is no. Did Tejasvi Yadav react? The answer again is no. So what has Tejasvi said? Tejasvi says, the comment of the Chief Minister has been misconstrued, and in fact what he also does say will shock you even more. So listen in to his defense. महिला विधायकों ने ये कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने सदन में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो अमर्यादित हैं। नहीं, देखिए एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है।
So Tejasvi says अगर आपने उस comment को गलत तरीके से लिया है, and clearly not the very first time that a neta makes a comment and then they blame everyone but themselves for having made that comment. Now, morality says that if you've said something as obnoxious as that, and that too on the floor of the assembly, when you have a lot of women MLAs also there sitting right next to you, you might as well apologize. But Nitish Kumar has chosen not to do that. Like I said, he's repeated that comment twice. His deputy is backing him and he's putting all the blame on the media. The BJP, as always, is looking for an opportunity to attack Nitish Kumar. So clearly, here they are, and rightly so. Because they say Nitish Kumar is losing the plot. Nitish Kumar is not fit to rule the state of Bihar anymore. Listen into a string of these reactions we've heard from the BJP's camp. But we can't expect that ki in upper house also CM has tell this type of statement. बहुत ही शर्मनाक और शर्मसार कर देने वाला माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान, जो बिहार की आधी आबादी को उन्होंने आज अपमानित किया है, जो पर्दे के पीछे जो लज्जा, जो महिलाओं की सर पे आंचल और पल्लू, जो सारी विषय जो होती हैं, उसको आप सरेआम आज बाजार में एक तरह से खोल कर रख दिया। क्या आप साबित करना चाहे, क्या आप बताना चाह रहे थे? उसमें कौन पिता नहीं था, कौन माता नहीं थी, कौन नाना नहीं था, कौन पुत्र वधुआ का व्यक्ति नहीं था? किसको आप इस बात को बता रहे हैं? ये है निवेदिता जी, बीजेपी और जेडीयू काफी दिनों तक साथ रही है। नीतीश कुमार एक गंभीर नेता के रूप में गिने जाते थे, तो क्या आपको लगता है कि उनके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज है? देखिए, कुछ दिनों से जो एक होता है बेमेल गठबंधन, जब तक हम साथ थे तो इंजीनियर नीतीश कुमार कहलाए जाते थे और विकास पुरुष के रूप में जाने जाते थे। लेकिन आज वो जो हैं, कहावत है संगत से गुण होते, संगत से गुण जात। तो जब नन मैट्रिक का इंटर पास व्यक्ति के साथ रहेंगे तो दिमाग भी आदमी का उसी तरह से काम करने लगता है। तो अभी वो हर बात तेजस्वी इससे पूछ के करते हैं, तो इनका जो जितना साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट था, इनका जो इंटेलिजेंस था, वो सब फेल हो गया है। अब सिर्फ यही है, इनका याददाश्त भी कम काम कर रहा है, बोलते हैं भूल जाते हैं। अभी कुछ और भी प्रकरण है जो आज उन्होंने किया। क्या स्ट्रेस में है वो? काफी स्ट्रेस में है। उनको लग रहा है कि अब मेरी कुर्सी अब ये नहीं रही, क्योंकि उन्होंने स्वयं घोषित कर दिया कि आने वाला मुख्यमंत्री फलाने जी होंगे। तो मुख्यमंत्री यही सोचे कि इस कुर्सी को नहीं मिला, उधर राष्ट्रीय संयोजक INDIA के बने नहीं, तो आखिर हम करेंगे। तो नीतीश कुमार बहुत जल्दी बेरोजगार होने वाले हैं। Let's also get Charu Pragya of the BJP with us. She's joining us on the phone line. Charu, you know, I'm sure you must have heard that comment. I won't say much. I will just say Nitish Kumar and his comment or when men do it. What do you say to such people, Charu? Because beyond a point, you realize that this kind of misogyny has actually turned commonplace. You know, a chief minister has the guts to say this in the assembly on the floor of the house, right in the middle, Charu, of perhaps multiple women MLAs. The same women MLAs that many say the women voter is a core for Nitish Kumar. They've, you know, ensured that he comes back to power again and again. He retains the state of Bihar. And the chief minister is so casually speaking about this as if women are objects. Good evening, Deepti. And the only word that I can use to describe Nitish Kumar's statement today is vulgar. It is so vulgar that I am ashamed any chief minister of my country, whether from my party or the opposition, use this kind of language. It is shameful. It is beyond belief. And these are the kind of people actually who are showing us the true mindset of the opposition alliance today. The India alliance actually stood in objection to every method that was adopted to make women more and more empowered in this country, so much so that these were the people who were against reservation for women as well. So on what grounds actually do you even deserve to be in government in the state of Bihar? And imagine he's not saying this in a close circle of friends. That would have been terrible enough. He says this openly on the floor of the House in Assembly, not once but twice. And I am actually waiting to see how many of these leaders from the India Alliance are going to call him out for this kind of misogyny, this kind of language. This Charu, forget the politics. Forget the politics. Will you just let this go away like that? I think we must not, because there is a line, Charu, that we need to draw.
And more so for netas like Nitish Kumar, who are chief ministers. I think, Charu, the BJP is also holding a press conference live now to get the first response from the BJP officially. के साथ एक जो प्रस्ताव आज आया बिहार सरकार के द्वारा कि बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाना है, उस आरक्षण की सीमा में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से समर्थन देने का काम किया। क्योंकि ईबीसी वर्ग में जहां पहले 18% आरक्षण थे तो उसको 25 या 30 जो भी करने की सरकार की मंशा है। हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि इसको 30 से अधिक परसेंटेज देकर इस आरक्षण को बढ़ाना चाहिए। एससी वर्ग में जहां 16% आरक्षण पिछले बार अभी तक है, उसको बढ़ाकर 20% करना चाहिए और 1% एसटी समाज के लिए था, जिसकी आबादी 1.68% हो गया। तो हम लोगों ने आग्रह किया कि उसको 2% करना चाहिए। और यह स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में रही है और जब भी जिस भी सरकार को समर्थन देने की जरूरत पड़ी है आरक्षण के मुद्दे पर, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देने का काम किया। और हमने बताया वहां कि मंडल कमीशन भी कैसे लागू हुआ। सरदेव बीपी सिंह जी के पास समर्थन नहीं था, मात्र 143 सांसद ही हुआ करते थे। 82 सांसद भाजपा का समर्थन देकर मंडल कमीशन लाने का काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी को भी समर्थन देकर। So that is Samrat Chaudhary there of the BJP right now, speaking also on the other issue that comes from Bihar today, that is the socio-economic data following the caste census, and he's expected to respond to Nitish Kumar and that comment also very shortly, and we'll cut across live then. But let's again quickly return to get you more reactions that have come in from the BJP. आप थे वहाँ पे सदन में, आपने एक बार बीच में रोका भी। नहीं, मैंने हाथ जोड़कर आग्रह किया कि नीतीश बाबू इन सब बातों से बचिए, लेकिन नीतीश कुमार जी मानने के लिए तैयार नहीं थे। जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने किया महिला बहनों के साथ, बिहार की 6.5 करोड़ महिला बहनें शर्मसार हो गई। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार के साथ क्या हो रहा है ये? नीतीश जी अब बीमार हैं, पूरी तरह बीमार हैं और कोई ना कोई गलत दवाई देने का काम ये लोग कर रहे हैं। कौन दे रहा है गलत दवाई? ये राजद और कांग्रेस के लोग ही देंगे दवाई दिया जा रहा है। और जो उनके साथ रहते हैं वही लोग करेंगे। क्या मेंटल स्ट्रेस में है वो? सम्राट जी, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए शर्मसार। इस्तीफे की भी मांग हो रही है, अब आपके पार्टी के लोग मांग कर रहे हैं कि एकदम करना ही चाहिए। बिहार की 6.5 करोड़ महिला बहनों के लिए जो अब शब्द का प्रयोग नीतीश कुमार जी ने किया है, उनको तो 1 घंटा भी मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक, और मुझे लग रहा है कि आज तक के इतिहास में कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने इस पर या किसी भी सदस्य ने माननीय विधानसभा या संसद में इस तरह की भद्दी गंदी टिप्पणी नहीं किया होगा। और महिलाओं का अपमान, पूरे मातृशक्ति को जो इन्होंने जिस प्रकार से अश्लील भाषा, मैंने वीडियो देखा, जो बात इन्होंने कहा है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि निंदास्पद है और इनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और पूरी देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर ये नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से इनको बर्खास्त करने की बात भी होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये विवेक शून्य हो गया है, ये मुख्यमंत्री के लायक अब नहीं रह गए। ये नीति इनका पूरी तरह से, ये अनैतिक बात करने वाले
ऐसे मुख्यमंत्री को और संवैधानिक और अश्लील हरकत करने वाले मुख्यमंत्री को किसी भी हालत में रहने का, राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। इनको मुख्यमंत्री के पद पर उस कुर्सी को इन्होंने पूरी तरह से कहा जाए कि उसकी कुर्सी का भी मर्यादा नहीं रखा और अशोभनीय है। The language used by Mr. Nitish Kumar ji inside the assembly is most vulgar, indecent, misogynistic, and it symbolizes a mindset which is anti-woman. On the one hand, the Prime Minister has passed Nari Shakti Vandan Adhiniyam. We bow down to Matru Shakti. We have celebrated Navratra. We celebrate woman power. But on the other hand, this is the kind of language the Chief Minister of Bihar is speaking, and this is an alliance which says ladki hu, lad sakti hu. They say that they are for women's rights. No wonder Rajasthan has become number one in rapes. No wonder women are not safe in Bihar. No wonder it is a jungle raj. No wonder people like Shanti Dhariwal, who say Mardon ka Pradesh, get a ticket in Congress party from such an alliance. No wonder that this kind of statement evokes no reaction from Mamata Banerjee, from Priyanka Vadra, Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, Arvind Kejriwal. Do they condone such statements or do they condemn it? This is the mindset of the Chief Minister of Bihar. Imagine what will be the plight of the women of Bihar if such a kind of language is spoken inside the assembly. This is the most misogynistic, sexist, patriarchal and extremely anti-woman statement made by him. And therefore, today the women of Bihar are rejecting this kind of Jungle Raj government. We also have another reaction from the BJP. Sanjay Jaiswal ji is joining us on the phone line. Sanjay ji, good evening and thank you for speaking to us on Republic. Now, Nitish Kumar is said to be very, very calculative. He's an astute politician. People call him a Sushasan Babu. Then how could that Sushasan Babu make a comment like he did? He has lost all his senses. The kind of language he has spoken in Vidhan Sabha, I have realized these things 1.5 years back, that he is not in his senses. And he needs a proper treatment. He needs counseling by psychiatrist. He needs a psychiatric counseling. No normal person will speak this kind of language in front of, in the Vidhan Sabha, where so many women MLAs are sitting there, so many men are there, and the whole India is watching. As a Bihari, I am feeling ashamed that my Chief Minister is speaking this kind of language in the front of everyone. It's really very shameful. Even as a Bihari, I am feeling ashamed that how a person from my state who is Chief Minister at present can speak these kind of things in Vidhan Sabha. We all talk about population stabilization, but the way he has talked, the language he has used, it's unimaginable that anyone who is having slight sense of himself will never speak this language. The truth is that Nitish is definitely having Alzheimer's disease. He has he has become insane. He needs psychiatric checkup, and his medical report should be published so that all Biharis has the right to know that he is a mentally sane person. Because no sane person will speak this kind of language in the Vidhan Sabha, and that too repeating the same things twice. It's not like that it has come automatically. He has lost his senses. He needs a proper review, and the whole Bihar is in trouble, because if the Chief Minister doesn't know what he is speaking, what kind of language he is using, what kind of sentence he is choosing for definitely a very important issue like population stabilization, this shows that the whole Bihar is in trouble. And I am really sorry. All right, Sanjay Jaiswal ji, we leave it there right now, and clearly nothing much to say when that kind of a comment is made, and clearly there is no apology coming in. In fact, Tejasvi continues to back that comment. I thank you right now for speaking to us, and we head into a quick break. In the India Today Best Universities 2023 survey, released recently,
India's #1 ranked universities in various streams are JNU Delhi, Amity University, AIMS Delhi, IIT Delhi, and National Law School, Bengaluru. बता रहा हूँ पतंगे रस्सी दूसरे खाने बोल रहा हूँ ना, इस तरह बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ कितने पुलिस वाले सस्पेंड हो गए इस चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुंह खोल रहे हैं। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? होगा कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और हाँ ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारी नाम लिया था, महीनों लगे। हवाला में जो काम हो रहा है, अब देखिए अब इनको पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इस्तेमाल किए, कभी नहीं पहले किए। यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं क्या? हम लोग तो चला रहे हैं। ये जो वेड ये सब चीज छोटे वाले ये लोगों ने पूरा टोटल में मतलब गेम लगता है। आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो CM साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, हमेशा जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। बता रहा हूँ पतंगे रस्सी दूसरे खाने बोल रहा हूँ ना, इस तरह बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ कितने पुलिस वाले सस्पेंड हो गए इस चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुंह खोल रहे हैं। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? होगा कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और हाँ ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारी नाम लिया था, महीनों लगे।
नाला में जो काम हो रहा है, अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इस्तेमाल किए, कभी नहीं पहले किए। यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। ये पूरी प्रकार खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं। जानवरों का पूरा चला रहे हैं। ये जो वेड ये सब चीज छोटे बने हैं, लोगों ने पूरा टोटल में मतलब गेम लगता है। आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, सेक्रेटरी हाउस में आते थे, तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि Viewers, you're watching Republic TV. I'm Shivangi Shukla, getting you the latest, and we start off with a top update coming in right now. A big update coming in, viewers. This Tuesday evening, a fresh police complaint by J. Anand Dehadrai against Mahua Moitra, where he has accused the TMC MP of trespassing, intimidation, and the breach of peace, viewers. That is right. A latest complaint coming in, fresh complaint against Mahua Moitra by Supreme Court lawyer J. Anand Dehadrai, where he is going ahead and is alleging these three points: trespassing, intimidation, and breach of peace, and even conspiracy to cause physical harm. Let's go straight to Madhurima joining us right now. Madhurima, a revenge attempt. That's what J. Anand Dehadrai is saying. A fresh complaint being launched against Mahua Moitra. Take us to the details. Well, Shivangi, some very serious charges have been leveled by Mr. J. Anand Dehadrai, where he's come forward and said that he's apprehensive of the fact that she could intentionally come to his residence and then foist multiple allegations and then can use them as a leverage to make him withdraw those complaints that he has leveled against Ms. Moitra in the past. And most important one is to hand over the custody of Henry. He's been belligerently fighting this entire case against Ms. Moitra, that he wants his dog back. And of course, the entire ethics committee investigation is underway as well. So the charges that he's leveled in this particular complaint are very serious. It's criminal intimidation, then there is trespassing, then there is breach of peace as well. So we'll have to take wait and watch as to how the police investigate this entire matter. But he has brought it in the broad daylight that yes, there could be an attempt from the side of Ms. Moitra to come to his residence. He's expecting that, and that she could go there, create ruckus, and then slap more complaints against him and make more ruckus. So he is apprehensive about it. So being prudent, he's taken this step and filed his complaints with the police. Shivanga. Right, Madhurima is getting us top updates coming in right now, and what we can tell you is this: what you see on your screens are the latest updates coming in. The fresh complaint by J. Anand Dehadrai against Mahua Moitra, where he's accused the TMC MP of trespassing, intimidation, and a breach of peace, viewers, and also adding that this is nothing more than a conspiracy to cause physical harm.
also saying that this is nothing more than a revenge attempt. This is a fresh complaint, by the way, which Dehad Rai has filed. Viewers, big updates coming here on Republic TV. Remember that already Mahua Motra is being investigated in the cash for query case. Let's move ahead, viewers. Today marks 1 month of Israel-Hamas war. It was the 7th of October when Hamas launched a massive surprise attack on several towns of Israel. Republic has been on ground zero, getting you all the updates. Here is a recap of how the war situation has unfolded in the past 1 month. Take a look. There are the missile that has been fired where the people have been taken to the safer place. The confident about the Israeli forces on their way. So there is an alert which has been given. आप देखिए ये इस वक्त जो है फायरिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ದಿಟ್ಟ ವರದಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು लगातार हो रही बम्बार्डमेंट, आर्टिलरी फायर की गई है. रॉकेट यहां गिरता है, कार का जर्रा जर्रा तबाह और बर्बाद हो चुका है. As you can see in the sky, you see the rockets. You see the lines of the rockets that were fired towards my area. The amount of the rockets they got. You can hear right now a siren. I'm going to get into the safe space. Yes, I think you should go to a safe space. Yes, yes. I think we would expect you to go to Avishak. We would wish you all the safety. Go to a safe space. Republic is with the Israeli forces. Israeli forces who has clearly mentioned that they are going to retaliate and they are completely ready now. As we can see, the confident about the Israeli forces has it and they are on their way, as we can see. जो है एक रॉकेट से आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हमला किया जा रहा है. आप देखिए कि रॉकेट जो है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं. लगातार विजुअल्स जो है वो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अब सायरन जो है वो बज रहे हैं और ये विजुअल्स आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर देख रहे हैं. एरिया यू विल सी इज द गाजा स्ट्रिप एंड देयर आर सम smokes that are coming out of, and that is the areas that have been recently, a couple of minutes back at around 5:59 Indian time, they were targeted by the Israelis. इजराइल का एयर डोम सिस्टम जो है वो इस वक्त एक्टिवेट हो गया है. आप देखिए ये इस वक्त जो है फायरिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है. यहाँ पे हमें कहा गया है कि यहाँ पे नीचे हो जाए. मैं विजय सुरेंद्र से कहूँगा कि वो नीचे हो जाए. और वो देखिए आप हमारे सिर के ऊपर से लगातार जो है मिसाइल्स जा रही हैं. ये सबसे बड़ा हमला जो है वो हुआ है. आप देखिए बिल्कुल पास में जो है वो यहाँ पे मिसाइल्स गिरी हैं. लगातार जो है मिसाइल्स यहाँ पर लैंड हो रही हैं. आर्टिलरी का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया गया है. मैं विजय सुरेंद्र शाह से कहूँगा कि वो भी यहाँ पर आड़ ले लें, क्योंकि लगातार जो है वो फायरिंग आप देख सकते हैं किस तरह से इंटेंस शेलिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है. Okay, there are the missile that has been fired. As we can see, they have been going they have been going to a safer zone is what we see, but we are trying to get the visuals. Okay, everyone has been moved to the safer side. They have been taken to the center as there are more missiles that has been fired. We're also just going to the safer location. Okay, see, we can see here the visuals are on your screen where the missile has been fired from the Hamas terrorist, and it is continuously been fired where the people have been taken to the safer place.
We are just 500 meters away from the Gaza city because on the other side it's an Hamas terrorist who have been constantly firing rocket, but which is that has also been intercepted. देखिए अब यहाँ पर जो है फायरिंग एक बार फिर से आर्टिलरी फायर जो है वो यहाँ पर इजराइल की तरफ से किया गया है हमास के इलाकों में। यहाँ से आप जहाँ से धुआं उठ रहा है वहाँ से फायर को लॉन्च किया गया है। ये लगातार विजय सुरेंद्र शाह आपको दिखा रहे हैं और ठीक देखिए आप एक और फायर जो है वो यहाँ से किया गया है। आपको लगातार दिख रहा होगा धुआं जो आ रहा है यहाँ से आर्टिलरी फायर जो है वो गाजा पट्टी के इलाकों में किया जा रहा है। This is the fire where the Hamas is firing multiple rockets at this point of time, but it has been intercepted by Israel, is what we know. So yes, it's a fresh attack, a fresh rocket that has been fired from the Hamas side. As you can see, there are Merkavas and there are tanks, BMPs tanks, which is being placed here. We are just going in and around to show you the visuals of the Israel Beri Kibbutz, the Hamas terrorists who came. They burned many of the houses and then they were waiting for the people to come out of their house, and they directly had an open fire. This is one of the bikes that they used not only to get into this area, but then to selectively target each area. And this is the house that was targeted by the Hamas terrorists. This still has the magazines, the bullets are still there. There is a helmet of the Hamas terrorists. Everything lying here. On October 7, where the Hamas terrorists who came in with the motorbike, they invaded into motorbike. They have destroyed the entire pharmaceutical house. There are magazines, there are bullet magazines, as well as the helmet of the Hamas terrorist, and the bullets, as you can see on your screen. So this was used by the Hamas terrorists to kill people. There was alert that was given by the forces, and there were some of the explosion that also happened. We'll just move. See, as you can see on the visuals, as you can see, there are explosion that has been the rocket that has been fired by the Hamas terrorist. It was. It has been targeted here at the kibbutz Beri, as you can see on your screen. Okay. We have to get down again. It's a missile. It's a missile has been fired. As you can see on your screen, there are missiles. We're showing you. Alicia has been exclusively reporting from the ground zero that this was the Iron Dome system that has just now fired another missile. So these are the exclusive visuals that we are showing on the Republic Media Network, that Iron Dome system working. ये देखिए, ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी और सीधा रॉकेट इसके ऊपर आकर गिरा है, जो बताता है कि किस तरह पिन पॉइंट टारगेट जो है वो सिविलियन एरियाज को किया गया। कोशिश हमास के आतंकियों की ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचाया जाए, और उसमें कहीं ना कहीं वो सफल भी रहे जब सिविलियन इलाकों को उनकी तरफ से निशाना बनाया गया। At around 6:30 a.m. where kibbutz Beri was living their own life, but what happened at 6:30 when thousands of Hamas terrorists who invaded, whether through maritime, whether through aerial, or whether through land, and now you can see the condition of kibbutz Beri. यहाँ पर हजारों की तादाद में आपको टैंक्स दिखाई दे रहे हैं। आर्मी पूरी तरह से तैनात है और किसी भी वक्त गाजा को इन्वेड किया जा सकता है। मेरे कैमरा पर्सन सुरेंद्र शाह आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, देखिए बहुत खतरनाक इलाका है। अभी यहाँ पर कम से कम 30 से 35 राउंड रॉकेट दागे गए थे। As you can see on the visuals, it was the visuals of the last evening where there were missiles that really hit hard at the houses. The entire area has been cordoned off. The police has asked all the residents, but you can see the visuals how the complete house has been destroyed. The preparations are in full swing. How the troops are preparing for the ground battles. The tanks have been installed. The big Merkavas are here on the ground to totally wipe out the Hamas terrorists, and so does the regular briefings of the soldiers that are taking place. This is the damage, the extent of damage that they have done, that nothing here is left lively. They wanted to
destroy everything, and that is what exactly the terrorists of Hamas have done. The rocket launcher, the RPG grenades, and also the axes and whatnot they were carrying. Even they were carrying the gasoline with them so that they can kill the people and burn them. इस वक्त जो है एक बड़ा हमला हुआ है इजराइल के सैडरोड शहर में। आप देखिए कि एक मिसाइल जो है वो दागी गई है। हम लोग यहाँ पर थे, उसे टारगेट किया गया है हमास की तरफ से, और तकरीबन अगर बात की जाए तो चंद मीटर की दूरी पर हम लोग जहाँ पर मौजूद थे वहाँ पर आकर ये प्रोजेक्टाइल गिरा है। आप देखिए ये कार जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, और ठीक सामने जहाँ पर एक तरफ इजराइल की तरफ फोर्सेस की तरफ से गाजा पट्टी के अंदर पूरा ऑपरेशन जारी है, उस बीच एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है लगातार, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान रिहायशी इलाकों को पहुंचाया जा सके। Viewers, much more coming up on the other side. Israel's relentless fight against terror continues. This war against Hamas now completes 1 month. Stay tuned. Okay, there are the missile that has been fired where the people have been taken to the safer place. The confident about the Israeli forces on their way. So there is an alert which has been given. आप देखिए ये इस वक्त जो है फायरिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है। ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ದಿಟ್ಟ ವರದಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು लगातार हो रही बम्बार्डमेंट, आर्टिलरी फायर की गई है। रॉकेट यहां गिरता है, कार का जर्रा तबाह और बर्बाद हो चुका है। In the India Today Best Universities 2023 survey, released recently, India's #1 ranked universities in various streams are JNU Delhi, Amity University, AIMS Delhi, IIT Delhi, and National Law School, Bengaluru. पतंगे रस्सी दूसरे खाने बोल रहा हूँ ना, इस तरह बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा, बड़े बड़े लोग भाई, यहाँ पुलिस वाले सस्पेंड हो गए चक्कर में। एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुंह खोल रहे हैं। पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग? और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और हाँ ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारी नाम लिया था, महीनों लगे। हवाला में जो काम हो रहा है, अब देखिए अब इनको पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इस्तेमाल किए, कभी नहीं पहले किए। यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है।
अरे 25 जानवरों का पहले पूरा चला रहे हैं। ये जो वेड ये सभी चीज छोटे वाले मतलब पूरा टोटल में मतलब धूम लगता है। आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, हमेशा जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। यहाँ पे तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जोरदार धमाका हुआ, गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। हम यहाँ पर रिपोर्ट करने पहुंचे तो और अचानक जोरदार अलर्ट जारी किया गया और उसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई जहाँ धमाका हुआ है। तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर थे जब ये प्रोजेक्टाइल जो है वो यहाँ पर आकर गिरता है। गुरसमन, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये इम्पैक्टफुल अटैक इसलिए किया गया क्योंकि हमास को कहीं न कहीं बॉर्डर लाइन करने की कोशिश हो रही है। हम लोग नीचे थे, वही कारण है कि बच पाए, अदरवाइज जो इसके शेल्स थे, जो इसके फ्रेगमेंट्स थे, वो भी लग सकते थे और उससे भी नुकसान हो सकता था। Update coming in. Remember that shocking statement of Nitish Kumar, the shocking statement of Nitish Kumar, which has got him entangled in a controversy. Well, a reaction is coming in. Chairperson of the National Commission for Women, NCW, has said this, and I quote here: NCW, on behalf of every woman in this country, demand an immediate apology from CM Nitish Kumar. His crass remarks in the Vidhan Sabha are an affront to the dignity and respect that every woman deserves. Such derogatory and cheap language used during his speech is a dark stain on our society. If a leader can make such comments so openly in a democracy, one can only imagine the horror the state must be in to endure his leadership. We stand firm against such behavior and call for accountability. That is right, viewers. We see this statement coming in where the NCW is demanding an immediate apology from Nitish Kumar. And remember that JDU chief is right now in very hot water because many people have tagged his commentary as crude and obscene on social media as well. Nitish Kumar is entangled in a controversy once more, not the first time, following his speech in the state legislature on Tuesday, that is today itself. CM Nitish Kumar has attempted to explain that female education contributes to population control while he was presenting the results of the latest caste census carried out by his government, viewers. Now, what we see right now is the NCW coming out and saying that NCW is saying that on behalf of every woman in India, they are demanding an immediate apology from CM Nitish Kumar, viewers. So top update coming here on Republic TV. And as we keep getting you more updates, let's go to Prakash, our senior editor, who's joining us. Prakash, this bizarre remark has really shocked the entire country. Now the NCW is coming out and saying that this is a sexist, this is a misogynist statement. It's a dehumanizing statement. They're saying that we need an apology on behalf of every woman in this country. Prakash. Well, the NCW has sought an explanation from Nitish Kumar, seeking an apology. And yes, it's disgraceful and deplorable as far as this comment has been made by the Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, in both the houses of Bihar, that is the Bihar Vidhan Sabha and Bihar Vidhan Parishad. And NCW seeking apology. I am joined by Nivedita Singh, BJP MLC. Nivedita ji, National Commission for Women ने apology seek किया है नीतीश कुमार से इस तरह के और अमर्यादापूर्ण बयान देने के लिए। देखिए, अभी पहले भी आपके चैनल के माध्यमों से मैंने बताया कि जिस तरह की अमर्यादित भाषा का उपयोग नीतीश जी ने सदन में किया, तो हम लोग पहले भी नेशनल वुमेन कमीशन में जाने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो इनकी ओछी मानसिकता और जो दिमागी संतुलन इन्होंने खो दिया है गत 1 वर्षों में, तो हम अपनी बात को रखने के लिए वुमेन काउंसिल में जाएंगे और हम लोग पार्टी जो निर्णय करेगी उसके आधार पर उसको आगे हम लोग बताएंगे कि ये समाज के लिए खतरा है ये मुख्यमंत्री और महिलाओं को अपमानित करते हैं ये मुख्यमंत्री। देखिए, इस मुख्यमंत्री जी का दोहरा चरित्र दर्शाता है
एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप महिलाओं को बेइज्जत करने का काम करते हैं सदन के बीच ही। और बीच में जब महिलाएं बैठी होती हैं और इस तरह की भाषा का उपयोग जो मुख्यमंत्री जी ने आज किया है, वो पूरा सदन शर्मसार है, पूरी बिहार शर्मसार है, पूरा देश शर्मसार है कि कभी भी कोई मुख्यमंत्री इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकता है। So there you have BJP MLC Nivedita Singh clearly saying that the BJP has also decided to go to the National Commission of Women they will be writing a letter very soon and they will be meeting and demand that the Chief Minister should resign as soon as possible. Back to you. All right, thank you, Prakash, for getting us all the details coming in right now. And what we see is a big statement coming in. And we're being joined right now by Uday Singh, BJP intellectual cell Bihar, who has joined us on the phone line. Uday Singh, I'm coming to you right now. And I want you to help us understand that how does a comment like this really show respect towards women? This is a very, very crass comment coming in. We have been watching Mr. Nitish Kumar since long. He was a very sound politician and academically also he is an engineer. But in recent days when he speaks in public, he commits such silly mistakes which has been making him a personality of public humor in fact. He himself is Home Minister of the state of Bihar and he asks his people to call the Home Minister of the state. And on so many occasions we have seen that he is making absurd remarks and in public he is speaking such language which is objectionable for a chief minister to speak. Today also when he was speaking in the House, he meant that educating women will be in fact useful in controlling population. And while speaking that, he went up to saying that when education will be given to women, then population will be checked as the things which happened between men and women and all such things which was really objectionable and shameful for the women members in the House. So this is very tragic and we are surprised at how the state is being run. That the Chief Minister of a state is speaking such language which is unparliamentary, undemocratic and objectionable to women, then how the state is being run and who is running the state? Hello? All right, thank you, Uday Kumar Singh. Thank you so much, Uday Kumar Singh, for joining us here. BJP Intellectual Cell Bihar. Very, very big update coming in. NCW demanding apology from Nitish Kumar. And remember, Nitish Kumar had said that educated women could have sex without getting pregnant and that educated women knew how to avoid getting pregnant when men, quote unquote, did it. A very, very shocking comment. We'll track the story very closely, taking a short break. बता रहा हूँ पता नहीं रस्सी दूसरे खा रहा हूँ ना इतना बड़े बड़े लोग हैं यहाँ तक कि यहाँ के कोई नेता नहीं छुड़ा बड़े बड़े लोग भाई यहाँ पुलिस वाले सस्पेंड हो गए इस चक्कर में एक विधायक भी पैसा मांग रहे सीधा मुंह खोल रहे हैं पैसे की डिमांड किसके थ्रू करते हैं ये लोग और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और हाँ ASI क्या वर्मा उससे विनोद वर्मा का नाम ले दिया कि यहाँ का व्यापारिक नाम दिया था नहीं हो रहे हैं
प्राइवेट जेट से प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इस्तेमाल किए कभी नहीं पहले किए। यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं, सकते क्या चला रहे हैं। ये जो वेड ये सभी चीज छोटे बने मतलब पूरा टोटल में मतलब गेम लगता है। आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए, जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब से काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी, हमेशा जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। यहाँ पे तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जोरदार धमाका हुआ, गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। हम यहाँ पर रिपोर्ट करने पहुंचे तो और अचानक जोरदार अलर्ट जारी किया गया और उसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई जहाँ धमाका हुआ है। तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर थे जब ये प्रोजेक्टाइल जो है वो यहाँ पर आकर गिरता है। मुरसमन, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये इम्पैक्टफुल अटैक इसलिए किया गया क्योंकि हमास को कहीं न कहीं बॉर्डर लाइन करने की कोशिश हो रही है। हम लोग नीचे थे, वही कारण है कि बच पाए, अदरवाइज जो इसके शेल्स थे, जो इसके फ्रेगमेंट्स थे वो भी लग सकते थे और उससे भी नुकसान हो सकता था। Burning question. Nitish Kumar makes a vulgar and a misogynist speech, that too on the floor of the assembly in the state of Bihar. And that particular comment right now has drawn the ire of millions of people across the country. And if you're thinking, will the Deputy Tejasvi Yadav react? Will he say that the comment made by Nitish Kumar was wrong? We aren't surprised because the Deputy Tejasvi continues to back Nitish. In fact, he says that the comment has been misconstrued. The BJP lashes out at Nitish's comment demanding the resignation of the Chief Minister. Nitish Kumar tables the caste census report in the Bihar Assembly. He's pitching for a 75% reservation. ऐसे आरोप से गिरे मुख्यमंत्री को एक दिन भी सीएम की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। आपको मैं गारंटी देता हूं, महादेव सट्टेबाजी घोटाले में भाजपा दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी।
That is the Prime Minister raising the Mahadev scam. He says Chief Minister Bhupesh Baghel's house has become a den for gamblers. Israel's relentless fight against terror continues as a war against Hamas now completes a month. And 5 terror attacks in 4 days in Pakistan. Terror haven Pakistan is witnessing an all-out chaos. A very good evening. The show's called The Burning Question and I'm Deepthi Sachdeva. We are actually prepared to bring you an entire conversation centered around the caste census speech by Nitish Kumar and the big battle of 2024. And Nitish Kumar would have expected that's going to be the headline, that's going to be the talking point, and people will hail Nitish Kumar. But then, Nitish Kumar is responsible for his own downfall. In just about 40 seconds, ladies and gentlemen, Nitish Kumar has today proved why he is completely unfit to rule the state of Bihar. Forget about the big battle of 2024, and clearly, in case he believes that he can be the next Prime Minister and the INDA alliance should appoint him as a convener, he's horribly wrong. Can the INDA alliance, I was thinking, really support Nitish Kumar for what he has said? You call him a Sushasan Babu, you call him an astute politician, you can say a lot of things about Nitish Kumar. He's done a lot of work for girls, for women, for the welfare of the poor, the downtrodden, the Kurmi caste. Yes, he's also spoken about the caste survey in his own state of Bihar. He's also someone who's had a good working relationship with the BJP until he realized that, you need to cut that truck and get on with the RJD, and the JDU together can rule the state of Bihar. But today, like I said, in just those 40 seconds, Nitish Kumar has demolished his own credibility. The kind of comment that he has made, now I'm not sure how many of you have already seen it, but if you are active on the social media, there is a fair amount of chance that you must have heard that comment. And when I also heard that comment from Nitish Kumar the first time around, I had to sit back and double check. I couldn't believe this is the Nitish Kumar everyone talks about. This is the same Nitish Kumar who's been a multiple-time Chief Minister of the state of Bihar, and this is the same Nitish Kumar